If I'm audible and visible, then kindly give a thumbs up in the comment section below so that we can begin this particular session. So guys, welcome all of you in the today's PIB MCQ series. Okay, so basically in this particular session, we are going to discuss the most important MCQs that we have already discussed in the month of February 2022. So देखो, as the title says that you cannot miss these particular MCQs because all the important MCQs that we have covered in this month of February 2022, I am going to discuss all those MCQs in the today's session. Here you can see these are the prime topics for the exam. See, when we talk about the PIB, it stands for Press Information Bureau, but I would say that this is not the Press Information Bureau. Instead, it is the Primary Information Bureau. क्योंकि बच्चों देखो, RBI SEBI NABARD हर एग्जाम में PIB से क्वेश्चंस हमेशा आते हैं, जरूर आते हैं. तो अगर आप सब मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो भाई जल्दी जल्दी से थम्स अप दे दो कमेंट सेक्शन में, जिससे कि हम इस सेशन की शुरुआत कर सकें. ओके, so guys, do give a thumbs up in the comment section below so that we can begin this particular session. Let's force some more few students. In the meanwhile, Anjali is saying that can EduTap come with this initiative for previous 3 months for RBI? Definitely Anjali, we will try our best to come up with such kind of series as well. But here I would like to tell you that we will be continuing this particular series in the upcoming time period as well. So do not worry about it. We will be covering these particular parts as well. Okay. So guys, without wasting any more time, एक और बहुत ही खुशखबरी आप सभी के लिए that we are running a success sale in which we are offering 40% plus 10% off on our various courses. तो बच्चों बिल्कुल यूज कर लो ये सारे कोड्स. द कोड दैट यू आर रिक्वायर्ड टू यूज इज EduTap. अगर EduTap डाला तो भाई 40% प्लस 10% ऑफ आप लोगों को मिलने वाला है. तो बहुत मुनाफे वाली बात है, जल्दी जल्दी खरीद लो, ठीक है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम गाइस, लेट्स मूव ऑन टू द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द टुडेज सेशन व्हिच इज हियर ऑन योर स्क्रीन. So basically this particular question is based on the ramp program. Okay, so the question is which one of the following statements is correct, incorrect in relation with the ramp program. तो बच्चों बजट के टाइम पे रैम्प प्रोग्राम डिस्कस हुआ था कि वे रैम्प प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लागू करने वाली है एमएसएमईज के लिए. व्हाट वाज द रीजन? हम सभी ने देखा कि लॉकडाउन की वजह से ना हमारी जो एमएसएमई सेक्टर है वो काफी लड़खड़ा गया है. तो उसको वापस से लाइन पर लाने के लिए, उसकी रैंप वॉक कराने के लिए गाइस ये रैम्प प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेकर आया है. और इस क्वेश्चन में आपको मुझे बताना है कि इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है इन रिलेशन विद द रैम्प program. So guys, to tell me in the live chat section that what exactly is the right answer to this particular question. The very first statement says that the RAM program will be rolled out to improve the accessibility of formal sources of finance to the MSMEs. It will be rolled out with an outlay of 12,000 crore over a period of 5 years. Or in June 2021, the Asian Development Bank has approved a loan of $500 million to assist RAM program. So guys, please tell me quickly that what exactly is the right answer to this particular question. But guys, I'm not able to see any single comment from you guys. Please comment in the live chat session so that we can also communicate with you that what exactly are the right answer, what is your performance in this particular session. I'm looking at it that there are no comments in the live chat. Guys, please tell me that what exactly are the different, what exactly is the right answer to this particular question. The statements are mentioned here. The RAM program is really very important initiative taken by the government. तो बच्चों जल्दी जल्दी बता दो कि what exactly is the right answer here. लाइव चैट में गाइस, लाइव चैट में आपको बताना है कि क्या है इस क्वेश्चन का सही आंसर. अगर नहीं आता तो प्लीज टाइप skip in this particular question so that we can discuss this particular question. Okay. तो बच्चों आई थिंक किसी को भी सवाल का जवाब नहीं पता है, किसी ने कोई भी कमेंट नहीं किया है अभी तक लाइव चैट में. So let's see that what exactly is the right answer to this particular question. And here when we talk about the RAM program, guys, the RAM program was basically rolled out so that the formal source of finance can be provided to the MSMEs. The second statement says that it will be rolled out with an outlay of 12,000 crore over a period of 5 years. Guys, here it is not the 12,000 crore, but instead of this, government of India has allocated
6,000 crore rupees for this particular project, and that is the reason that the statement number 2 is absolutely incorrect. So now when we talk about the third statement says that in 2021 Asian Development Bank has approved a loan of $500 million to assist the RAM program. देखो एक बैंक है जिसने पहले ही $500 million की फंडिंग दे दी थी इस प्रोग्राम के लिए इंडिया को, तो वो उस बैंक का नाम क्या है guys? It is not the Asian Development Bank, instead it is the World Bank which has basically done this particular part, and Navjot Kaur and Balaji are saying that it is the option 2 which is the incorrect. But guys, it is not just option 2, basically it is option D, that is both statement 2 and 3 are incorrect in relation with the RAM program. The reason we have already discussed. And guys, here this particular program is really very important to bring the MSME sector online, so that they can really just come up, जो भी उनको नुकसान हुआ है ना उनके कोविड-19 के टाइम पे, उसकी भरपाई पूरी हो सके, वो वापस से ट्रैक पर आ सके. And guys, we are not discussing anything new in this particular session. See, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, कुछ नया मैं डिस्कस नहीं कर रहा. हमने ऑलरेडी ये पर्टिकुलर रैम प्रोग्राम बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया था on 14th of February. On 4th of February, guys, here the link of that particular session is already mentioned here. 4 फरवरी को मैंने एक सेशन पर्टिकुलर लिया था रैम प्रोग्राम पे, and here you can see the details of that as well. The aim of this particular program was to improve the access to the formal sources of finance, and in June 2021 World Bank has approved $500 million. So guys, now let's move on to the next question, and let's see that how many of you will be going to answer the question correctly. So the next question is a very, very halwa question, and the question is, which one of the following has recently commenced India's first of its kind project of mixing hydrogen into the natural gas system at Indore, Madhya Pradesh? So guys, बहुत ही हलवा question है. Do tell me the right answer in the live chat, that which one of these has recently released this India's first of its kind. See, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है बच्चों? इंडिया में एक चीज पहली बार हो रही है, ठीक है? जो चीज पहली बार होगी वो एग्जामिनर की नजरों में आ जाएगी, और guys, that will really be important from the exam point of view. So when we talk about this question, the options are GAIL, NTPC, Oil and Natural Gas Limited, SAIL, or Mahanagar Gas Limited. And people are saying, Raksha is saying that it is the right answer is GAIL. Let's wait for others as well to answer this particular question. And Navjot is opting option A, and guys, option A is absolutely the right answer. So Gas Authority of India Limited is the organization which has recently commenced this India's first of its kind project of mixing hydrogen into the natural gas system. And guys, here see, the name of the organization is important, but apart from that, the place at which this particular plant will be set up is also very important, that is Indore, Madhya Pradesh. So do remember this particular part, and Tanya is also saying GAIL. So absolutely right, the right answer is GAIL. And here you can see that we have already discussed this particular topic in the session which I have taken on the 4th of February, and the link of this has been already mentioned here. You can just go through it. If you have not watched the session, the complete details will be found on this particular link only. The PDF will be shared. Okay, now let's move on to the next question of our today's session, and the next question is once again on the very, very important topic, that is the NABARD research portal which was being launched recently. So guys, इस क्वेश्चन में जल्दी जल्दी बताओ लाइव चैट में कि भाई कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है इन रिलेशन विद द NABARD रिसर्च पोर्टल. और गाइस, ये NABARD रिसर्च पोर्टल पे ना आंसर करने के लिए आपको ये पता जरूर होना चाहिए कि NABARD एग्जैक्टली है क्या, तभी आप सक्सेसफुली इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे. सो लेट्स सी द व्हाट एग्जैक्टली आर द डिफरेंट स्टेटमेंट्स हियर. द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट सेज दैट इट हैज बीन क्रिएटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. सी, NABARD आया है, सबसे पहला डॉट बच्चों के दिमाग में आएगा कि भाई डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी करें या फिर कोई और हो सकता है. सी, बायोटेक्नोलॉजी इज रियली वेरी वेरी रिलेटेड विद द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट विद व्हिच the NABARD is basically related to. And guys, here you can see the third statement is also saying that P in the NABARD stands for pharmaceutical. So guys, please tell me that what exactly is the right answer to this particular question. भाई नहीं आता तो skip कर देना, कोई दिक्कत नहीं है. It will be a learning for all of you. एग्जाम में गलत नहीं होगा. Okay. So guys, here when we talk about the second statement, the aim of this particular NABARD research portal has been mentioned here, and Janani is saying that it is option number 3. That is
correct. So guys, when we talk about the correct statement in this particular question, the right answer to this question is option E, that is both statement 2 and 3. So when we talk about the department which has created this NIPER research portal, so guys, ये department of biotechnology नहीं है, the department of pharmaceutical under the Ministry of Chemical and Fertilizers is the right answer to this particular question. Balaji is saying the chemical. Okay, so absolutely right, the Ministry of Chemicals के अंदर आएगा, but it is the Department of Pharmaceutical which has basically launched this particular portal. Launch क्यों हुआ था बच्चों ये portal? The launch was basically to synergize the academy as well as research. देखो आपने सुना होगा सबका साथ सबका विकास, इस बात को तो आपने हमेशा सुना होगा गाइस. दैट्स व्हाई जब एकेडमिक्स और रिसर्च दोनों मिलेंगे, मिलकर काम करेंगे, इंडस्ट्री और एकेडमी दोनों मिलेंगे, तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू लीड आवर नेशन इन दिस पर्टिकुलर pharmaceutical industry to a higher level, and that's why the right answer to this question is option A, and Tanya has also once again answered the question correctly. So बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हो डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल ने ये भेजा है, बेसिकली लॉन्च किया है. रीजन क्या है कि भाई इंफॉर्मेशन को हमें फैलाना है कि भाई निपर इंस्टीट्यूट जो है हमारे वो एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं, जिससे कि जो इंडस्ट्रीज है वो पर्टिकुलर निपर रिसर्च पोर्टल्स को कांटेक्ट कर सके, उनके साथ मिल सके और अपने प्रोजेक्ट्स को वो कोलैबोरेशन में आगे लेकर जा सके. ओके, सो दैट वाज ऑल फ्रॉम दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So the next question is here on your screen, and this question is basically based on a very important topic, that is Intensified Mission Indradhanush. Guys, Intensified Mission Indradhanush is really very important. क्यों important है भाई? It is from the topic of social sector in India, health. भैया स्टार मार्क कर लो इस टॉपिक को, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं. कोविड-19 पैंडेमिक का टाइम है और अगर हेल्थ के बारे में आपने नहीं पढ़ा, हेल्थ से रिलेटेड न्यूज आर्टिकल्स नहीं करे, तो बच्चों फिर बड़ी मुश्किल वाली बात होगी. ठीक है, सो व्हेन वी टॉक अबाउट द मिशन इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष, सो इन दिस क्वेश्चन यू आर रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट इन द लाइव चैट. सो गाइस, लाइव चैट में बड़ा सन्नाटा सा छाया हुआ है. भाई सन्नाटा क्यों है? जल्दी जल्दी आंसर करो कि क्या है एग्जैक्टली इस क्वेश्चन का आंसर. सबके सब एकदम चुप होके बैठे कि सर हमको तो नहीं आता. भाई नहीं आता तो स्किप कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. ठीक है, सो व्हेन वी टॉक अबाउट द इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष, so guys, basically the very first statement says that it was launched in October 8, 2017. The second statement says that it aims to reach each and every child up to 5 years of age and all those pregnant women who have been left uncovered under the routine immunization program. IMI 4.0 has been launched recently and would be conducted in 3 rounds. तो इनमें से कौन-कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? Please tell me in the comment section below. And Balaji is saying that B is wrong because it's 2 years and not 5 years. वाह यार, बालाजी की नजरें बड़ी तेज है. क्योंकि भाई देखो सेकंड स्टेटमेंट में एब्सोल्युटली दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, एंड द रीजन बिहाइंड दैट इज बेसिकली दिस प्रोग्राम एम्स टू रीच आउट चाइल्ड व्हिच आर अप टू द एज ऑफ 2 years एंड नॉट द 5 years. इसी तरीके से ट्विस्ट करेगा बच्चों एग्जामिनर, इसी तरीके से ट्विस्ट करेगा. जो ये इंपॉर्टेंट डेटास है ना, वो क्या करेगा, डेट को चेंज कर देगा या फिर एलिजिबिलिटी चेंज कर देगा, और यहीं पर आपके क्वेश्चन फंसते हैं, यहीं पर बच्चे मार खा जाते हैं एग्जाम के अंदर और नेगेटिव हो जाता है आपका. सो गाइस, बेसिकली ध्यान रखना एग्जाम में कि ऐसे जो डेटा है ना, ऐसे फैक्ट्स को हमेशा दिमाग में बिठा के रखना. भाई एलिजिबिलिटी, डेट, किसने लॉन्च किया है, क्यों लॉन्च किया है, these are all the important points that you are required to remember from the exam point of view. And Tanya is saying initiated in 2014. So Tanya, you are absolutely incorrect here because this particular statement is absolutely right. It was launched on October 8, 2017, and the right answer to this question is option E, that is both statement 2 and 3. Okay, so guys यहाँ पर incorrect कर लेना, ठीक है. Both statement 2 and 3 are absolutely okay. यहाँ पर basically 1 and 3 आएगा, ठीक है. So I am correcting this, PDF में correct हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. Both 1 and 3 are the right statement in relation with the intensified mission Indradhanush. Okay, moving on to the next question. So guys, basically ध्यान रखना, second state अगले क्वेश्चन से पहले मैं आपको बता दूं, ये सेशन आपका ऑलरेडी हो चुका है. इस मिशन के अंदर अगर आपको और ज्यादा डिटेल में जाना है तो यू कैन रियली वॉच दिस पर्टिकुलर सेशन. ओके, when we talk about IMI 4.0, all the important information has been mentioned there. The 3 rounds कब कब शुरू होंगे, कितने टाइम के होंगे, क्या क्या होगा बच्चों, सब कुछ हमने ऑलरेडी
डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, सो यू कैन काइंडली गो थ्रू दिस पर्टिकुलर सेशन. इट इज रियली अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन फॉर ऑल ऑफ यू फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट. सो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने भाई रिसेंटली डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 को लॉन्च किया था. तो जब भी इंडेक्स कोई आता है वो भी डेमोक्रेसी इंडेक्स, गाइस, इट इज रियली अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू. एंड व्हाई सो? हियर यू कैन सी दैट यूक्रेन रशिया क्राइसिस इज ऑलरेडी गोइंग ऑन. भाई जब ऐसे ऐसी चीजें इंसिडेंट्स हो रहे हैं ना, उस टाइम पे डेमोक्रेसी के ऊपर कोई इंडेक्स आ जाए तो गाइस इट बिकम्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट. So when we talk about the question basically is based on the index. कि भैया आपने जब भी इंडेक्स पढ़ा होगा आपने क्या देखा होगा कि भाई हमने पढ़ लिया कि रैंक किसकी टॉप पे आई है, इंडिया की रैंक कितनी है, ये इंडेक्स लॉन्च किसने किया था. बट अपार्ट फ्रॉम दैट द फ्रेमवर्क ऑफ दैट पर्टिकुलर इंडेक्स इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. और हमने आरबीआई ग्रेड बी के जो हमारा प्रीलिम्स से एग्जाम था, हमने देखा था कि ऐसे क्वेश्चंस को ट्विस्ट किया था उन्होंने, और तभी ये क्वेश्चंस आपके मुश्किल हो गए थे और बच्चों को लगा कि भाई ये तो हमको नहीं आता. बट गाइस प्लीज मेक श्योर दैट यू आर आल्सो कवरिंग सच काइंड ऑफ डायमेंशंस एज वेल व्हेनेवर यू आर कवरिंग द रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस. So when we talk about the options are civil liberty, function of the government, political participation, political culture, and the voting transparency. And Monica saying that the right answer is option A, that is civil liberties. Naved is opting for option D. Balaji is opting for option E. भाई बालाजी आज पूरी फॉर्म में है क्योंकि द राइट आंसर टू द क्वेश्चन इज ऑप्शन ई, दैट इज वोटिंग ट्रांसपेरेंसी. So basically voting transparency was not the part of the democracy index 2021. So guys जल्दी देख लेते हैं कि टॉप परफॉर्मर्स क्या थे, बॉटम परफॉर्मर्स क्या थे. तो भाई टॉप किया था नॉर्वे ने, स्कोर था 9.75. When we talk about the bottom, then Afghanistan was on the 167th position. But when we talk about India, which is really very important from the exam point of view, तो भैया इंडिया की रैंक है ना जो 46 है इसके अंदर, ठीक है, और इंडिया को प्लेस किया है फ्लॉड डेमोक्रेसी रेजिम में. अगर इसके अलावा भी आप चाहते हो कि भैया कोई भी और डिटेल अगर आप देखना चाहते हो तो गाइस काइंडली गो ऑन दिस पर्टिकुलर लिंक. पीडीएफ में ये लिंक आपको मिल जाएगा. पूरा सेशन देखना, बहुत ही बढ़िया सेशन है. और साथ में all the important findings of this particular index have already been discussed in the very detailed manner in this particular part. Okay, so guys, now let's move on to the next question. तो अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस. स्कीम्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. और ऐसे ही एक बड़ी अच्छी सी स्कीम रिसेंटली लॉन्च हुई थी जो है सीड स्कीम, दैट इज द स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ द DNTs. So guys, please tell me that which one of the following statements are correct in relation with the scheme for economic empowerment of DNTs seed. तो जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में कि भाई क्या है इस क्वेश्चन का सही जवाब. तो बेसिकली जब हम बात करें सीड स्कीम की तो गाइस हियर दिस स्कीम हैज बीन लॉन्च फॉर DNTs, दैट इज डी नोटिफाइड ट्राइब्स. तो बेसिकली जब भी ऐसी स्कीम आई तो बच्चों क्या क्या पढ़ना है ये आप अच्छे से ध्यान रखा करो. कोई स्कीम आई तो किसने लॉन्च की, क्यों लॉन्च की, किस ईयर में लॉन्च हुई, उसके टारगेट्स क्या हैं और बेनिफिशियरी कौन होगा बेसिकली इस पर्टिकुलर स्कीम का. दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आर रिक्वायर्ड टू रिमेंबर. सो द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट सेज दैट इट वुड बी लॉन्च्ड बाय the Ministry of Social Justice and Empowerment. The second statement says that it would be launched by for the welfare of scheduled tribes in India. It has been formulated for the families which are having the income of rupees 1.5 lakh or less, and it will be having 4 components with an approximate cost of rupees 200 crore to be spent over a period of 5 years. So guys, all these statements are really very important from the exam point of view. ये सारी की सारी जो की इंफॉर्मेशन है ना जो आपको जरूरी है इस स्कीम के अबाउट याद करने के लिए, दैट आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट. गाइस ये स्कीम नहीं पढ़ी तो सीरियसली दैट इज रियली very bad thing for all of you. And here Monica is saying that the right answer to this question is option E. Balaji is also opting for option E, that is A and D are correct. So guys, when we talk about the right answer to this question, the right answer is option E, that is both A and D. तो भैया ऑप्शन बी में क्या गलत है भाई, पहले ही मैंने आपको हिंट दे दी इसकी कि it has not been launched for the scheduled tribes in India. Instead it has been launched for the denotified tribes which are being existing in India. तो बच्चों किसी तरीके से ये जो ट्राइब्स है ना ये हमारे डेवलपमेंटल फ्रेमवर्क से, जो गवर्नमेंट का डेवलपमेंटल फ्रेमवर्क है उससे दूर हो गई हैं. तो बेसिकली उनको इंपॉर्टेंट फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए इस स्कीम को बेसिकली लॉन्च किया जा रहा है. अब हम बात करें ऑप्शन सी की, तो भाई ये गलत क्यों था. तो बेसिकली इस स्कीम के अंडर जो बेनिफिशियरीज हैं वो कौन होंगे, ये ट्राइब के लोग
जिनकी जो इनकम है दैट विल बी लेस देन 2.50 लाख एंड नॉट 1.5 लाख. So that is why that it is really very important that you are required to remember कि beneficiaries और framework है क्या एक्चुअली स्कीम का. और अगर आप देखना चाहते हो कि भाई इस स्कीम के अंडर और क्या क्या डिटेल्स है, तो बच्चों 17 फरवरी को ये सेशन हुआ था, देख लेना, भूलना मत, क्योंकि ये स्कीम पेपर में आने वाली है और आपको पूरे के पूरे 8 नंबर भी मिल सकते हैं स्कीम से. अगर दो वाले, अगर एक पैराग्राफ के दो वाले क्वेश्चन आ गए मेंस में, तो बच्चों 8 नंबर आपके कहीं नहीं जाते. ठीक है, तो जब when we talk about the four components of this particular scheme, so guys here in this particular scheme the government is basically targeting to provide the coaching of the good quality to the children of these particular tribes. Apart from that उनको health insurance provide किया जाएगा, livelihood initiatives लिए जाएंगे और साथ ही साथ उनको financial assistance provide की जाएगी. किस लिए? ताकि वो अपने घर बना सकें, for the construction of the houses. That is really very important for them. Okay, so guys, I hope that this particular scheme is very much clear to all of you, and now we are moving towards the next question. So the next question is, which one of the following countries will be taking over the presidency of the G20 from 1st of December 2022 to 30th November 2023? So guys, once again I would like to add here that during this Russia-Ukraine crisis, the role of these international organizations, the groupings is really very important. और उसके regarding अगर कोई भी change आता है presidency में, that is really very important from the exam point of view. तो बच्चों जल्दी जल्दी बता दो, बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, कौन सी कंट्री टेक ओवर करने वाली है प्रेसिडेंसी G20 की 1 दिसंबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2023 तक? ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इंडोनेशिया, इंडिया, मैक्सिको. क्या है इस सवाल का सही जवाब? एंड नावेद अख्तर इज सेइंग दैट इट इज ऑप्शन डी, इंडिया. तानिया इज ऑप्टिंग फॉर ऑप्शन डी, इंडिया. एंड गाइस, दिस इज द राइट आंसर. सो बेसिकली ये बहुत ही हलवा क्वेश्चन था. इंडिया इज द कंट्री विच इज गोइंग टू टेक द प्रेसिडेंसी. अब जल्दी जल्दी मुझे ये भी बता दो कि किस कंट्री से ये प्रेसिडेंसी इंडिया के पास जाने वाली है, वेदर इट इज ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इंडोनेशिया और मैक्सिको. कौन सी कंट्री से ये प्रेसिडेंसी इंडिया के पास जाएगी? जल्दी जल्दी बताओ लाइव चैट में कि क्या है इस क्वेश्चन का सही जवाब. वेदर इट इज इंडोनेशिया, मैक्सिको, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया. लेट्स सी दैट हु विल give the right answer to this particular question. And Raksha is saying that India. तो भाई इंडिया के पास तो आ गई, पर कौन सी कंट्री से आ रही है भाई, ये भी बता दो जल्दी से कमेंट सेक्शन में कि क्या है एग्जैक्टली राइट आंसर. तो भाई सन्नाटा छा गया है लाइव चैट में. तो लेट मी टेल यू दैट द राइट आंसर फॉर दिस इज इंडोनेशिया. इंडोनेशिया के पास प्रेसिडेंसी आ चुकी है, वो आई थी इटली से. तो बेसिकली इटली से आई इंडोनेशिया पे, इंडोनेशिया से आई इंडिया पे. तो बच्चों ध्यान रखना, तानिया और नावेद ने बता दिया इंडोनेशिया. वेल डन गाइस. बालाजी ने भी बताया, वेल डन बालाजी. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which one of the following ministries have recently launched the green hydrogen, green ammonia policy? तो बच्चों एक और हलवा क्वेश्चन आ चुका है आप सभी के सामने. ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया पॉलिसी रिसेंटली लॉन्च की थी गवर्नमेंट ने. तो जल्दी जल्दी बताओ कि भाई कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने बेसिकली लॉन्च की है. तो भैया बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होने वाली है यहाँ पर इस सवाल में, क्योंकि ये बेसिकली है रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड. ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया. भैया ग्रीन वर्ड आते ही यहाँ पर ना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि COP26 रिसेंटली हो चुकी है, हम सभी ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं. तो कौन सी बेसिकली मिनिस्ट्री है? अब जब इसकी बात हो ना रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड, तो मन में पहला ख्याल आता है कि भाई मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी होगी, जो कि एब्सोल्युटली इनकरेक्ट है. सो गाइस द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ पावर. और जो मैं सोच रहा था वो गलती हो चुकी है. जननी एंड रक्षा इज सेइंग दैट इट इज ऑप्शन बी. मोनिका इज सेइंग दैट इट इज ऑप्शन बी. Guys, it is not option B, it is option C, that is Ministry of Power. I am marking the star here, that's why. This is the question in which you will be confused very easily, और examiner इसी तरीके से खेलेगा आपके साथ. तो बच्चों ध्यान रखना, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया पॉलिसी पे कोई क्वेश्चन आता है तो आंख बंद करके मिनिस्ट्री ऑफ पावर को करेक्ट कर देना, क्योंकि राइट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड नॉट द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी. सो गाइस ये पूरी की पूरी स्कीम, पूरी की पूरी पॉलिसी हमने बहुत ही डिटेल में कवर की हुई है अपने सेशन में. द सेशन वाज कंडक्टेड ऑन 21 Feb. लिंक यहाँ पर दे रखा है, भूलना मत. नहीं देखा, मिस कर दिया तो भैया देख लेना. ऐसी जो पॉलिसीज के ऊपर क्वेश्चंस है, दे आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू बी कवर्ड कॉम्प्रिहेंसिवली. सो गाइस नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So which one of the following initiative has been recently launched by the Ministry of Housing and Urban Affairs? तो बच्चों इस
क्वेश्चन में बस ये बताना कि भाई मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने कौन सा इनिशिएटिव रिसेंटली लॉन्च किया था जिसमें उन्होंने बेसिकली इंटरेक्ट किया है बेनिफिशियरी से, उस पर्टिकुलर पीएम आवास योजना स्कीम के जो बेनिफिशियरीज हैं उनके साथ इंटरेक्ट किया कि भैया क्या क्या एक्चुअली प्रोग्रेस है इस पर्टिकुलर स्कीम की इंप्लीमेंटेशन की. सो व्हाट एग्जैक्टली इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन? मिलन ए द्वार, लाभार्थियों से रूबरू, घर घर दस्तक, आवास पे चर्चा और नन ऑफ द अबव. गाइस प्लीज टेल मी दैट व्हाट एग्जैक्टली इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन. कौन सा इनिशिएटिव है? जल्दी जल्दी बता दो लाइव चैट में कि क्या है इस सवाल का सही जवाब. एंड आई एम getting the right answers. Naved is saying that option B, Balaji is saying that option B, and that is absolutely the right answer. तो बच्चों लाभार्थियों से रूबरू इनिशिएटिव which has been taken to interact with the beneficiaries of प्रधानमंत्री आवास योजना. प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन क्या है? It is the flagship initiative of the Ministry of Housing and Urban Affairs to provide affordable housing to the urban poor. Okay, तो बच्चों ये ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. मोनिका और रक्षा is opting for option C. Guys, this is the wrong answer. The right answer is लाभार्थियों से रूबरू. Okay, so guys, if you want to see the whole session on this particular topic, you can just go to our EduTap channel, and on 21st Feb this particular session has been taken. The link has been mentioned here. Just go through it. But here I would like to say that ये जो लाभार्थियों से रूबरू initiative है, this was the 22nd edition of this program. बेसिकली ये इनिशिएटिव लॉन्च हुआ था सितंबर 2021 में, लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने. So moving on to the next question. Government of India has recently approved the New India Literacy Program. So guys, once again a very important program which was being launched by the government recently. और बहुत ही जरूरी प्रोग्राम है, पढ़ना बहुत ही जरूरी है क्योंकि हमारे सिलेबस में है ऑलरेडी सोशल इन सेक्टर इन इंडिया एजुकेशन. सो गाइस, एजुकेशन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट और उसके लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम बेसिकली लॉन्च हुआ है. तो जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में कि भैया कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है इन रिलेशन विद द न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम. The very first statement says that it is approved by the government for the period of 2022 to 2027. It will cover literates on the age of 10 years and above, or the estimated total outlay for this program is 1037.9 crore. So what exactly is the right answer to this particular question? कौन सी statement यहाँ पर correct? And Balaji is saying that option D is the right answer. Let's wait for some other people as well that what exactly is the right answer. And Balaji saying that it's 15 years, not 10. So absolutely right. It will cover non-literates of the age of 15 years and not the 10 years. And that is why the option B is absolutely incorrect. And the right answer to this question is option D. That is both A and C are right. And Tanya has also answered the question correctly. That is option D, both A and C. So guys, well done. जिसने भी option D select किया है, very well done to all of you. बहुत बढ़िया. Now let us move on to the next question. But before moving on to the next question, here you can see all the details about this particular program. The beneficiary, who will be the beneficiary, implementation कैसे होगी भाई? ऑनलाइन मोड में होगी, सारा का सारा मटेरियल ऑनलाइन मोड में मिलेगा. और यहाँ पर फाइनेंशियल आउटले की बात की जाए तो भैया 2022 टू 2027 के लिए टोटल जो एलोकेशन है वो है 1037.9 करोड़. Okay, so guys, this is basically the financial allocation. If you want to see this session in the detailed manner, then you can just click on the below link and you will be directed to that particular session only. तो बच्चों बाद में देखना ये session. Now let's move on to the next question. वर्क प्लान 2022 has been signed recently. तो बस सवाल ये है कि भैया कौन सी कंट्री के साथ इंडिया ने ये वर्क प्लान 2022 साइन किया है? Whether it is Australia, Germany, Indonesia, India or Mexico. Please tell me that with which country India has recently signed the work plan 2022. Guys, हलवा क्वेश्चन आ चुका है और हलवा सभी को खाना पड़ेगा, ठीक है? तो जल्दी बता दो कि क्या है इस सवाल का सही जवाब. ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इंडोनेशिया, मैक्सिको. किस कंट्री के साथ इंडिया ने रिसेंटली लॉन्च किया है, साइन किया है ये वर्क प्लान 2022? Let's see that who among you will answer this question correctly. So let's wait for the answer of the people here. And Ravjot Kaur is saying that option D, both A and C. Guys, this was the previous question. Now let's move on to the question number 11. Question 11 का आंसर तो जल्दी. And Naved is saying that Germany is the right answer. And guys, absolutely correct. Germany is the right answer. Germany के साथ basically इंडिया ने
साइन किया है वर्क प्लान 2022। तो बच्चों ये एक एनुअल मीटिंग हुई थी जहां पर ये वर्क प्लान साइन हुआ था, बट वहां पर ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी गई थी जर्मन साइड द्वारा, दैट वाज अबाउट द ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स। तो जब हम इस इंडेक्स की बात करते हैं तो अब जल्दी जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में कि अब एग्जैक्टली इंडिया की रैंक इस पर्टिकुलर इंडेक्स में क्या थी, whether it was 5th, 10th, 25th, 45th, what exactly was India's position in across the world in the global quality infrastructure index. And guys, the right answer to this particular question is 10. So basically India was ranked 10 across the world in the global quality infrastructure index. So moving on to the next question. So guys, the next question is basically based on the India-UAE Comprehensive Economic Partnership Agreement. So guys, historic agreement was being signed between India and UAE, and this question is basically based on that historic trade pact which has been signed between India and UAE. So please go through all these statements, tell me that which one of the following statements are correct in relation with the India-UAE Comprehensive Economic Partnership Agreement. क्या है इस सवाल का सही जवाब, जल्दी जल्दी बता दो कमेंट सेक्शन में. What exactly is the right answer? Guys, PIB is really very important from the exam point of view. हमने देखा है RBI SEBI NABARD हर एग्जाम में we get questions from the PIB. और अगर PIB कि आपने हमारे सेशंस देखे हुए हैं तो you will be very easily able to answer all these questions which will be asked in the exam from these PIB news articles only. Okay, तो जल्दी जल्दी देखते हैं क्या है सही जवाब. And Balaji and Naved is opting for option B. Monica is saying that option D is the right answer, that is all of the above. And guys, the right answer to this question is option D, that is all of the above. तो basically जितने भी यहाँ पर स्टेटमेंट दी गई हैं इंडिया यूएई सीईपीए के रिगार्डिंग, तो बच्चों इन्होंने तो यारी दोस्ती कर ली है, बट आप भी यारी दोस्ती कर लो पीआईबी से, क्योंकि पीआईबी से दोस्ती की तो भैया एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आएंगे और क्लियर हो जाएगा सक्सेसफुली. सो गाइस, जैसे सक्सेसफुली इंडिया और यूएई की ये जो एफटीए हुआ है बहुत ही कम अमाउंट ऑफ टाइम में हुआ है, वैसे ही पीआईबी से बहुत ही ज्यादा नंबर मिल जाएंगे बहुत ही कम टाइम में. ओके, सो गाइस, व्हेन वी टॉक अबाउट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट दीज इंडिया यूएई सीपीए, देन हियर यू कैन सी दैट इट इज एक्सपेक्टेड दैट इट विल लीड टू इंक्रीज इन द बायलैटरल ट्रेड फ्रॉम current USD 60 billion to USD 100 billion in the next 5 years, and these particular datas are really very important from the exam point of view. Moving to the second statement, here you can also go through them guys, but here the main thing is that with the help of this CEPA, basically it is going to generate 10 lakh jobs in the labor intensive sectors of India, and that is the reason also that this is a very historic part. And this was also again historic because India is basically celebrating the 75th year of India's independence, and it was also the 50th foundation for UAE. So guys, इन सभी डेटा का पूरा याद रखना. Moving on to the next question. Recently, Government of India, World Bank have signed a loan agreement of dash for the implementation of reward project. Guys, whenever such kind of projects are being there in the question in the news, then you are required to remember about the full form as well of these particular projects. तो इस क्वेश्चन में तो बस इतना बताना कि भैया लोन का अमाउंट क्या था, क्योंकि ऐसे जो लोन्स है वर्ल्ड बैंक हमेशा देता रहता है, बट फॉर द रिवॉर्ड प्रोजेक्ट व्हाट एग्जैक्टली इज द राइट आंसर? $115 million, $215 million, $315, $415, $500 million. So what exactly is the right answer to this particular question? So guys, please tell me. देखो $500 million की बात करें तो it was the amount for the ramp program which World Bank has already given to India in June 2021, and Naved is saying that it is option A, 115 million. And Balaji is also opting for the option A. Navjot Kaur is also opting for the option A, and that is the right answer for this question. That is $115 million for the reward project. So guys, the reward project basically है क्या? First of all, the reward project full form is really very important. That is the rejuvenating watersheds for the agriculture resilience through innovative development. So this particular part is really very important to be covered here. And when we talk about this particular loan agreement, it is being signed for the implementation of the reward project, and it is going to basically help national and state governments to improve watershed management practices in India. तो बच्चों अगर बाकी की डिटेल्स आपको रिवॉर्ड प्रोजेक्ट के बारे में देखनी है ना, तो इस पर्टिकुलर लिंक पे क्लिक करना मत भूलना. दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें इस प्रोजेक्ट को पूरा डिटेल में
डिस्कस किया हुआ है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट और ज्यादा वाटरशेड मैनेजमेंट के बारे में भी हमने इस पर्टिकुलर सेशन में डिस्कशन की हुई है. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द 14th क्वेश्चन. So which one of the following statements is correct in relation with the national supercomputing mission? So guys, the world is basically moving towards the artificial intelligence. Everywhere we can see that supercomputers are being installed. तो भाई इंडिया को सुपर कंप्यूटिंग वर्ल्ड में किस तरीके से हम आगे ले जाने वाले हैं, इसके लिए गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन. अगर हम बात करें द मैक्सिमम नंबर ऑफ सुपर कंप्यूटर्स इन द वर्ल्ड, सो बेसिकली द कंट्री विच इज होल्डिंग द रिकॉर्ड इज चाइना. सो coming back to the national supercomputing mission, guys, please tell me that which one of the following statements are correct in relation with the supercomputing mission. तो बच्चों जल्दी जल्दी बताओ क्या है इस सवाल का सही जवाब, कौन कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है. और ये वाला टॉपिक आपका जरूर जरूर सही होना चाहिए गाइस, क्योंकि ये कल ही टॉपिक कराया आपको पीआईबी का सेशन. कल का अगर देखा है तो इट विल बी अ हलवा क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू. सुपर कंप्यूटिंग मिशन इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, क्यों लॉन्च किया था, उसके ऊपर क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखना चाहिए. सबसे पहली चीज है कि भाई लॉन्च किसने किया, जब भी ऐसा मिशन है तो किसने लॉन्च किया, दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. तान्या इज सेइंग दैट इट इज ऑप्शन डी, दैट इज द राइट आंसर. So guys, when we say the very first statement, it is saying that it has been jointly launched by the Department of Science and Technology and the Ministry of Electronics and Information Technology. So National Supercomputing Mission में ना once again there will be a doubt in your mind कि भैया किसने लॉन्च किया. कंप्यूटिंग की बात हो रही है, हो सकता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ही होगा, बट अपार्ट फ्रॉम दैट द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाज आल्सो इन्वॉल्वड इन दिस पर्टिकुलर मिशन. Now when we talk about the implementation of the mission, then it will be implemented by CTech Pune and IISc Bangalore. The second statement says that it would be implemented with the estimated cost of rupees 4500 crores over a period of 10 years. So guys, this statement is really incorrect because it would be implemented for a period of 7 years and not the 10 years. So the right answer for this question will be option E, that is both statement A and B are correct in relation with the national supercomputing mission, and Navjot Kaur and Naved have answered the question correctly. Well done Navjot and Naved. Now let's move on to the next question of this particular session. So the next question is basically based on National Wash Conclave 2022. So guys, social sector in India health, once again this particular topic is related to that particular topic of the syllabus, that is social sector in India health. So recently Indian Vice President has inaugurated the National Wash Conclave 2022 from Chennai. So in this question basically आपको बताना है कि भाई कौन कौन से statements यहाँ पर correct है in relation with the National Wash Conclave 2022. क्या है इस क्वेश्चन का सही जवाब? So guys, the very first statement says that it is focusing on advancing water, sanitation and hygiene and panchayats. It has been organized by the National Institute of the Rural Development and Panchayati Raj in association with Jal Shakti, Ministry of Panchayati Raj, UNICEF and other development partners. Apart from that, it also says about the aim of this particular National Wash Conclave. Guys, see why it is very important. Mahatma Gandhi, the father of our nation, has said that the sanitation is more important than independence. भाई उन्होंने इतनी बड़ी बात की है तो भैया ये टॉपिक भी बहुत बड़ा होगा, which you are really required to remember from the exam point of view. So when we talk about the National Wash Conclave, guys, here all the important details are being mentioned here, and all these details about the National Wash Conclave are absolutely correct, and the right answer to this question is option D, that is all of the above. And Balaji has once again answered the question correctly, that is option D. That is all the statements which are being mentioned here are absolutely correct in relation with the National Wash Conclave 2022. So okay, that is the right answer to this particular question. And here in this particular session, which was being added on EduTap channel of the PIB series, that is 25th February, that is yesterday, we have discussed this particular conclave in a very detailed manner कि भाई क्या इसकी insights हैं, क्या inputs हैं, क्या करने वाले हैं. Basically wash programs के लिए जितने भी अप्रोचेस यहाँ पर ली गई हैं उनको सपोर्ट किया जाएगा. वॉश प्रोग्राम्स पंचायत में यहाँ पर क्यों ये ज्यादा फोकस कर रहे हैं गाइस, बिकॉज इट इज द कोर ऑफ द रूरल वाटर सप्लाई इन इंडिया, एंड दैट इज द रीजन दैट दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च्ड, दिस conclave has been taken place recently. So guys, basically that was the last question from our today's session, and guys, if you have liked the session, please
And if you are new to our YouTube channel, kindly subscribe it and press the bell icon also to receive all the latest updates. And if you want to download the PDF, क्योंकि भैया ये सारे सेशंस आपको देखने भी तो हैं, और लिंक कहाँ पर है? लिंक मिलेगा आपको PDF में. PDF कहाँ मिलेगी भाई? उसका एड्रेस है ये टेलीग्राम चैनल EduTap का. So do join the Telegram channel to download the PDF of this particular session. And guys, apart from this, you will also be able to download the other PDF of the other sessions as well from this Telegram channel. So do not forget to join the Telegram channel as well. So guys, that was all from the today's session, and if you are having any kind of queries, then you can please ask in the comment section. I would really be fortunate to answer all your queries in this particular session. किसी topic से related कोई question है या फिर कोई और issue है, preparation से related है, kindly ask me here and I will be answering your queries as well. So Balaji saying thank you. So thank you Balaji for your love and support. And guys, let's see that what exactly are the queries. Please ask your queries. Feel free to ask your queries. So I am not getting any kind of query. I am just getting the wishes from all of you. Thank you guys. Thanks a lot for your support. And Naved is saying thank you guys. So I hope that none of you are having any queries related to that. So guys, please do not forget. See, I will also be coming with such kind of question after 2 weeks once again. And for that, what you are required to do, what is the homework? You have to watch our PIB sessions on the daily basis. And from these sessions, you will be able to answer all the questions which will be asked in the exam on these PIB important news articles. Okay, so that will be really helpful for all of you. And guys, for today, thank you for joining us and wish you all happy learning. Thank you.